Hi friends, welcome to Cricket Caviar. Last match of Afghanistan, just league match. This is anyways a dead rubber week now after New Zealand completely washed Sri Lanka yesterday in Bangalore. इतना बड़ा win कर दिया है कि it was almost impossible for Afghanistan or Pakistan to match them on net run rate. So today was just like a formality. And South Africa, I would have to say, बहुत अच्छा chase किया उन्होंने. देयर वर मोमेंट्स जब थोड़ा सा प्रेशर में डाल पाए थे अफगानिस्तानी स्पिनर्स उनको बट yeah, hats off to Rassi Vanderderson for carrying his bat throughout and seeing them home. What do you think about today's match, Vishnu? Still struggled. It was like not convincing. There was a top order collapse, Yeah. and I'm just worried. If I'm a South African fan, I would be worried about Miller form because he's key to finish games, but he till date he has never finished a game properly. So Yeah, and just before this match, actually, this question was asked to Miller in the press conference कि are you an uncomfortable chasing side? और उसने completely इसको deny किया बोलता है नहीं ऐसा नहीं है वी हैव वन फ्यू मैचेस चेजिंग जबकि वो एक ही मैच जीते हैं वो भी एक विकेट से पाकिस्तान से सो yeah, आई डोंट नो व्हाई दे आर ट्राइंग टू जस्ट and शो he's दैट फेक completely कॉन्फिडेंस different player when he plays for GT and when he plays for country, man. He's very hesitant to go out and hit those boundaries and sixes. And that's his एक home और ground. या GT वो के भी लिए बात समझ नहीं आ रहा कि जीटी में ही इज एक्चुअली अ गुड फिनिशर फॉर जीटी बट साउथ अफ्रीका में ही इज ओनली एबल टू हैव एन इम्पैक्ट व्हेन दे बैटिंग फर्स्ट yeah, या साउथ अफ्रीका रियली मतलब कि मुझे समझ नहीं आता जो बैट्समैन हंड्रेड्स फिफ्टीज को हंड्रेड्स इतना इजीली कन्वर्ट करते हैं मतलब बैटिंग फर्स्ट में उनको क्या हो जाता है मे बी इट्स द टारगेट इट्स द नर्वसनेस एंशियसनेस टू एक्सेलरेट और somehow they lose their composure. That's what I feel. They lose their composure seeing a target. मतलब आज if you see Markram was looking so good. And normally in the first bat situation, when he looks so good, he scores 100. But today we saw he got out to in a very unfashionable way, not Rashid's best delivery also. So yeah, that really surprises me. But guys, Afghanistan has had a memorable World Cup. I mean, we could not have imagined 4 wins, but they have performed so well that we are disappointed by them. And some of our group members are actually heartbroken that they have not managed to reach the semifinals. And Matlab, what's your comment on that? I just want to know. I think you go. या अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेल दिखाया इस वर्ल्ड कप में जब बीच में 3 मैचेस इन अ रो जीते थे उसके बाद से सेमीज की एक्सपेक्टेशन तक आ गई थी जो इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ एक दो मैच जीतो और घर जाओ बट वो एक्सपेक्टेशन सेमीज तक पहुंच गई थी जब इतना कूल कंपोजर दिखाया था चेजेस में स्पेशली अफगानिस्तान ने और हाँ आज के मैच के बारे में भी वही है कि 30 रन शॉर्ट थे अफगानिस्तान तो शायद ये मैच भी फंस जाता था और yeah, very good effort from Afghanistan in this World Cup. Hoping they will be continue to play cricket like this. And yeah, South Africa ke yeah, I'm not convinced if this was a comfortable chase. And South Africa का problem of chasing से एक और बड़ा problem है is not able to get the tail out. I think वो बहुत ज्यादा बड़ा problem है क्योंकि मतलब कि आज भी देखो after getting Afghanistan for some 120 for 6 I think it was to then allowing Double those their score. partnerships with Rashid Khan with Hashmatullah with Naveen. Azmatullah Omarzai playing and Noor Ahmed scoring 28 actually. True. So, Yeah. And we have yeah. seen the same pattern like against Netherlands. Scott Edwards did the same, and even Mark Wood had a number 10 wicket partnership with Adil Rashid. So we have seen this pattern getting repeated over and over. तो मुझे लगता है South Africa should fear Cummins and Stark more than probably Warner and Labuschagne and Mitchell Marsh. They should not fear these guys. They should fear Even Zampa. Cummins. Zampa also had, yeah. Yeah, they Yeah. should fear these guys. Because really वो like बिलो पार स्कोर था और 48 ओवर तक नहीं जाना चाहिए था चेस.
Really like your point, Shikhar. Maybe they're missing a strike bowler like Nokia, maybe, who could have helped clean the tail तो हम fast. बोल ही But रहे हैं. Yeah. true. True, Kunal, and also Shamsi to some extent can get the tailenders out, and they are not playing Shamsi, they are playing Coetzee, and Coetzee is good, but I think Coetzee should replace Ngidi. मतलब Ngidi तो भाई Death सबसे means worst death bowler है. आज World का जैनसन नहीं था तो सबसे कोएटजी ने शायद उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, लाइक हाईएस्ट विकेट्स हो गए उसके अभी फॉर साउथ अफ्रीका इन दिस वर्ल्ड कप. But Coetzee is actually getting reverse swing also. मतलब he is a good bowler. Actually, अगर उतना pace और the attitude of a true fast bowler है उसमें, Like and somehow कोएटजी that and is not सिराज there बेस्ट in Ngidi. एटीट्यूड्स. Yeah. कुणाल, डिड यू सी द मैच थोड़ा बहुत लास्ट का? Yeah, I साउथ saw it अफ्रीका in कंफर्टेबल. Yes, I saw it in bits and pieces, but yeah, it felt South Africa was not comfortable, honestly, after they lost 3, 4, 5 wickets. I think they lost 2, 3 wickets at a stretch when Rashid Khan was bowling. After that, they were actually not comfortable. And had New Zealand got and Afghanistan got 1 or 2 wickets, things could have, become slightly more challenging. या एग्जैक्टली. So yeah, I think Afghanistan has improved by the way as a team, like I was telling you that day. And They also are good. they learned their mistake, and it was too late. In the previous game, Nabi should have bowled in the first replacement, but they that mistake they costed the game for them. Now they rectified it by having him first replacement, and he was the difference today to bring that game that close. Otherwise, मुझे नहीं लगता क्विंटन डिकॉक का he is having struggles with the off spinners. So Actually, that's Vishnu, you're so right. Like Nabi bowling in power play actually gives depth to their bowling attack. Now you can see Rashid Khan bowling till us दिन Rashid Khan ended his spell at around 27th over. Now you can see Rashid Khan was actually bowling into those 35th over, those 34th, 35th over when the pressure of the chase is really on. And yeah. that's how he got Klaasen's wicket. मतलब कि वो प्रेशर अलग होता है 30 to 40 ओवर्स में बॉलिंग करने का. एंड राशिद खान को हम आईपीएल में ही देख रहे हैं ना कि व्हेन बैट्समैन अटैक्स ही इज मोर डेंजरस. तो 30 to 40 ओवर्स में ही वो होगा. 20 to 30 में तो पीपल विल लुक टू प्ले हिम आउट. I mean, Very true. that's where the difference Even is. Gujarat ke liye comes around 12th over, and he directly balls 4 Yeah. overs from there. So Nabi ka mistake, it maybe two things. Mujib ka catch and Nabi ka mistake has costed them the semifinals for sure. And I think we are still so frustrated with Afghanistan's selection. I mean, Najibullah, आज इकरम ने इतना घटिया इनिंग्स जो खेला है, मतलब it was one of the worst innings I've seen in a World Cup. So, you could have easily had Najib and made Gurbaz keep. But और शायद नजीबुल्ला का लास्ट वर्ल्ड कप है, वो दोनों एडिशन खेला है पहले की, हाईएस्ट स्कोरर रहा है वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के लिए, तो उसको डिसरिस्पेक्ट किया है बेसिकली इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने. And we have been frustrated with Noor not playing. और अब मतलब कि जब फजल दो उनको ऐसे पिचेस मिले जब शायद फजल फारूकी को खिलाना चाहिए था, तो वो फजल फारूकी को नहीं खिलाए. एक्चुअली उसी पॉइंट पे मेरे को ये भी एक रियलाइज हुआ, जैसा हम सोचते थे कि पाकिस्तान के पेसर्स वर्ल्ड बेस्ट है, अफगानिस्तान के बेस्ट स्पिनर्स हैं, आई थिंक वो गलत धारणा थी. क्लियरली लास्ट 2 मैचेस के बाद लगा है कि अफगानिस्तान स्पिनर्स भी थोड़ा कंडीशन डिपेंडेंट है. वहां पे कुलदीप और हसरंगा जैसा मैजिक नहीं है कि किसी भी सरफेस पे फाइफर ले सकते हैं. and the weaknesses. राशिद खान ने प्रूव किया है हर जगह पर. मुजीब और नूर तो डेफिनेटली एक्सपोज हुए हैं अभी. और मुजीब वेरी बैड परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, एक्सेप्ट दैट मैन ऑफ द मैच Actually, अगेंस्ट इंग्लैंड. you इंग्लैंड के just अगेंस्ट मैन stole ऑफ द मैच the के अलावा कुछ भी नहीं किया है मुजीब ने. Yeah, he should have stole dropped. the point out of my mouth, Pratik, because I was going to say the exact same point. Like Mujibur Rahman has been very predictable. जो मिस्ट्री स्पिनर के एलिमेंट था उसके अंदर, वो टोटली अब खत्म हो चुका है. He is going to bowl leg spinner to right handers or off spinner to left handers. वो लियाम लिविंगस्टन जैसा ही बन गया है मुजीबुर रहमान. And everyone so much expects that कि मतलब कि ये ऐसा ही करेगा, सबको पता है. तो the इनफैक्ट मुझे याद surprise है इस element बार हम is आईपीएल में सोच रहे थे मुजीब को शायद एक भी मैच नहीं खिलाया था, हर मैच बाहर बिठाया था उसकी फ्रेंचाइजी ने.
तो आई थिंक अब वो हम्म, फ्रेंचाइजी जो भी मुजीब को बाहर बिठाती है वो लोग रचिन को लेने का ट्राई करेंगे, बिकॉज मुजीब को नहीं खिला रहे हैं अब लोग। हाँ मतलब आई थिंक विथ टाइम ही हैज बीन फाउंड आउट, मैं तो यही बोलूंगा। बाकी तो अफगानिस्तान के वीकनेसेस के बारे में और थोड़ा बात करते हैं। जैसे शाहिदी का इनिशियल फ्यू गेम्स आल्सो आई थिंक कॉस्ट अफगानिस्तान अ लिटिल बिट द स्ट्राइक रेट। एंड फर्स्ट बैटिंग में मुझे अभी भी लगता है शाहिदी इज नॉट दैट कंफर्टेबल बैटिंग फर्स्ट में। But they played really well. I mean, Azmatullah Omarzai proved me wrong because I always said कि Najibullah should play at that position, but he has played brilliantly in that position. ये He's तो मैं not only बोलूंगा। taken Najib's position, he's also taken मोहम्मद नाइब्स position, जो एक ऑलराउंडर पहले yeah, कैप्टन था लास्ट एडिशन में। yeah, true. वो भी he is also हम्म, sitting out because Yeah, Azmat is गुलबदीन performing नाइब, both with bat and गुलबदीन ball. नाइब। Gulbadin. Yeah, Gulbadin Gulbadin. Naib, not Mohammad Naib. Yeah, Gulbadin Naib. हाँ हाँ And one हाँ। positive they can be proud of is their batting. They always Yeah. used to collapse and they always used to हम्म, depend on the bowlers. But this time, few matches they literally won it because of the batsmen. Like Yeah, Pakistan, I think 6 months back we were talking that Afghanistan is still like a T20 team. They can do well in T20s because you don't have to bat for a longer time. But yeah, Afghanistan has matured from that, I believe. yeah, that Pakistan हम्म। chase is like next level. It was Yeah, like especially those chases, they won by 8 wickets, 7 wickets, and 7 wickets. Those three chases in a row. Actually, one more point I would just like to add. Probably they should have chased only. Matlab they should have just kept on chasing whenever they got the opportunity. Want to see the stats, like how many times they actually chose to bat first. Hmm. Because मुझे लगता है अगर उनका जो चेज था वो फिनोमिनल था, मतलब कि शाहिदी लुक्ड अ डिफरेंट प्लेयर इन दैट Oh, they चेजेस। opted to bat today. Yeah, that is weird. But again, South Africa को तो आप because of chase ही South करवाना Africa. चाहोगे. हाँ, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इट्स स्टिल अंडरस्टैंडेबल, Yeah. बट आई New वांट टू सी Zealand हाउ did मेनी। that mistake. Yeah. But yeah, they should always try. They're a good chasing side. Like we have seen against Pakistan, we have seen against probably Sri Lanka also they chased, right? So जैसा मुझे मतलब दिखा है, तो I think they are good. They are not a very good batting first side Yeah, क्योंकि बांग्लादेश का मैच आज that अभी is the कितना main. क्रूशियल प्रूव हो गया, क्योंकि अगर वो मैच उनको जीतना चाहिए था, मतलब कि Yeah, बांग्लादेश वाला मैच that proved the most costly match for Afghanistan. Otherwise they would have been in semis. And of course Maxwell, ठीक है भाई, that is class, that is skill, that is everything that we could dream of from an ODI innings. But Bangladesh से हारना, I think there is no excuse Yeah, that is for very that. interesting कि इधर मैच अगर जीत जाते बांग्लादेश या ऑस्ट्रेलिया से तो शायद सेमीज पहुंच जाते हैं, मतलब they were seriously very close to reach the semis. very true. Yeah. Yeah, And we have to say New Zealand, I don't know if they were unlucky or whatever, but उनका performance, they should be worried because 4 matches in a row they lost. Um, Yeah, that's not and good for New Zealand. Kiwis also have Kevin Williamson coming back now. Maybe थोड़ा बहुत ऊपर नीचे changes करेंगे. That might still I Like if think we we talk about top four now, I think is New Zealand the weakest? have the top order. yeah. I mean, How can you we say the always weakest when they say. have Rachin Michael is like, Ravindra watch your batting? words carefully. अभी next week रुला देंगे. नहीं, we always ये तो think that they हर are वर्ल्ड weak. कप हम ऐसे ही सोचते हैं कि न्यूजीलैंड आर द वीकेस्ट, Yeah, न्यूजीलैंड विल but नॉट मेक द टॉप फोर। when they ये have न्यूजीलैंड if, का तो स्टोरी वही है, न्यूजीलैंड आर नॉट स्ट्रांग इनफ, बट somehow somewhere they are always there, everywhere, in fact every time they are there. तो मतलब क्या न्यूजीलैंड के and बारे में क्या ही बोले, just it's their they, attitude, their just sanity, मतलब कि I would say the control, the sanity, the the composure, the The trying to fearless always play cricket the they play, controllables. Shikhar. The fearless cricket. हाँ, We get nervous when India play, but as the players playing for the country, they never feared that the ICC Hmm. tournaments. yeah, and New Zealand में they still play together as a team, right? They perform collectively as a team. They're usually, I perfect, mean, they're never perfect. dependent on 2 3 people, right? Mm.
I think that Yeah, South Africa is weakest because their players panic and also they are very bad chasers. मतलब they are yeah. It seems things have changed in a week's time. इसके पहले we were saying that almost everyone is in form in South Africa. I think besides one batsman, everyone has Hmm. scored a century since the World Cup. So South Africa is Hmm. thoda, like it happens every year, they're losing steam as the tournament That is that's progressing. a very good point. Second half South Africa का इतना अच्छा नहीं रहा है. They were I think 4-4 or चौदह 5-5. that Yeah, Netherlands Hmm. loss yeah, made us believe probably that hit them this hard. is not the chasing side. Invincible नहीं है हाँ. Hmm. I Batting think more first. than Netherlands, also the Pakistan में जैसे वो लोग chase किए हैं ना. And Kunal is so right. I mean, New Zealand plays as a sum of all the individuals. They are actually the sum of all the 11 players. But if you see South Africa, they are not. They are sometimes not. They do not play as a team. मतलब कि उसमें भी individual specific रहता है, conditions apply होता है. We always talk about Shamsi. We always talk about some Dickov, Bavuma, Riza Hendricks. Makram. बट हम न्यूजीलैंड में कभी बात नहीं करते हैं कि मतलब कि ये नहीं है वो नहीं है ऐसा मतलब हार्डली हम कभी बात करते हैं न्यूजीलैंड का हम तो न्यूजीलैंड के लिए कुणाल एक चीज पॉइंट बोलते थे इज कि राइट उनके भी चेजिंग थोड़ी बैड है. बड़ा स्कोर 300 प्लस चेज नहीं कर सकते. पर वो भी उन्होंने प्रूव गलत कर दिया ना जब 380 बनाए थे सेकंड इनिंग्स बैट करके. तो या यार उनकी न्यूजीलैंड इज अ लाइनअप है. कंप्लीट टीम. They have a good lineup, right? They have Rachin Ravindra coming on top, who's in really good form. They have Williamson now in the middle order. They have, Glenn Phillips and other players to finish. हाँ, maybe finishing थोड़ा खराब है उनका. I बट mean, या आई थिंक द ओनली वे दे कैन इंडिया को फंसा सकते हैं वो ये है कि इंडिया को फर्स्ट बैटिंग करवाएं और एक गुडिश स्कोर पे फंसा दे. लाइक 325 इट्स अ गुड स्कोर बट नॉट सो मच इन टुडेज वर्ल्ड. तो ऐसा कुछ स्कोर पे अगर इंडिया को उन्होंने फंसा दिया तो आई थिंक दे कैन बीट अस. yeah, our bowling is strong. ठीक है. I don't think New Zealand would want to chase against our bowling. They would That want is us the to bat second. difference. बट नो बट नो वन वांट्स टू डिफेंड इन वानखेड़े. वानखेड़े में डिफेंड करना बहुत मुश्किल है. That's also true, but you have to look at the other team also, right? इंडिया की इतनी अच्छी bowling चल रही है. Why would you want to chase against India? बताओ, would you want to? नहीं नहीं वो बात सही है पर मुझे ये भी मालूम है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सब कंडीशंस बॉलर्स के साथ थी लेकिन हम केन विलियमसन को आउट कर ही नहीं पाए. वो खड़ा हो गया बोला भैंचो स्विंग करो सीम करो मैं आउट नहीं होऊंगा. दोनों इनिंग्स में उसने रन्स बनाए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जिताया अपने साइड को. मुझे भी लगता है कि our Indian team won't be comfortable in chasing. मुझे लगता है but I don't know. वानखेड़े में I'm not sure. Yeah, I mean, our नहीं team बट is कुणाल का playing पॉइंट well. सही है. वो Let's see. वानखेड़े में जो स्विंग होता है लाइट्स Hmm. जैसे लाइट्स चालू But the होती है thing is, वो. Kunal, that day ऑस्ट्रेलिया के साथ अफगानिस्तान बॉलर्स they were swinging 30th over में भी swing हो रहा था but the thing is they didn't had that third fast bowler. Yeah, या third थर्ड third पेस. pacer, So true. वी हैव 3 पेसर्स नाउ. या वी हैव yeah, दैट so लग्जरी. I think ऐसे बोल रहा हूँ. Against this bowling, this India bowling, I don't think anything would want to chase. so I think बस विलियमसन ही है एक जो बहुत स्ट्रांग प्लेयर है टेक्टिकली. बट या उसके अलावा तो या वी कैन पेनिट्रेट थ्रू न्यूजीलैंड बैटर्स. whom did we play in Wankhede? Afghanistan, श्रीलंका Sri श्रीलंका. Lanka, right? Okay, Sri Lanka के what do साथ you yeah. guys think about tomorrow's matches Australia Bangladesh and there is one more match which I'm forgetting I think It is Pakistan England पाकिस्तान का Yeah, I दोनों think मैच Pakistan England इंटरेस्टिंग will है. be fun. I think या यार पहला तो ठीक ही होगा यार. we नहीं need नहीं पाकिस्तान to England see कुणाल will be bro. fun. भाई He gave कुणाल a तू big पहला मैच statement. का रेफरेंस नहीं समझ रहा. अगर ऑस्ट्रेलिया चाहे तो इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर सकती है मजे में मस्ती में. भाई वो लोग 12 यार, पॉइंट्स पे हैं और अगर वो ऐसे सच में माइंड गेम्स खेले तो जबरदस्ती हार के इंग्लैंड को बाहर कर सकते हैं. यार एंड सेकंड देखना गेम तो पड़ेगा. यार मजा आएगा बिकॉज बाबर आजम idiot thinks he can still reach semis. He had plans, bro. He has plans. yeah, he Let's has see what plans plans. already. Plans ready for England. I am Plans to eat scared. biryani, I guess. I And think बाबर ने ऐसा कुछ बोला है ना कि I am ready for this situation so I am really interested to see what he is going to do tomorrow. भाई ऐसा कौन सा केस है जो एनालिस्ट नहीं सोच भाई पा रहे कल बाबर वो आजम को. 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट पे नहीं खेला ना. लेनी पड़ेगी कल सब अरे लोग ले लेंगे that साले की. साले that's की. कुदरत का निजाम anyways. Hmm. What do you think about the second game though? Who do you think will Bro, win? he England, was Pakistan? still saying कि if fucker stays till 20th we are in the game. अरे साले तू क्या करेगा फिर फकर भी कर रहा है तो. इस in the media में he was saying कि fucker if he साले stays till 100 20th. स्ट्राइक रेट से ये लोग बैटिंग कर नहीं पाते हैं और इनको 450 बना के 160 पे ऑल आउट करना है इंग्लैंड को वो भी मतलब कैन यू इमेजिन द डेयरिंग दैट दे हैव.
नहीं भाई, मुझे लग रहा है इंग्लैंड कल जीत सकती है। इंग्लैंड वैसे भी थोड़ा थोड़ा फॉर्म में आ रही है धीरे धीरे, एंड या आई मीन मलान इज इन स्टोक्स ने वेरी मैच गुड थोड़े टच। बना लिए, तो भाई अच्छा कल होगा, बट सैम करन को वापस खिलाना चाहिए यार, उसको बाहर बिठा रखा है बेचारे भाई को इस स्टोक की सैम चक्कर करन सटक ने गई तो वो बहुत साला खराब इतना खेला। ग्राइंड करके एक सेंचुरी मारेगा, 250 ऐसे मारेगा टोटल। भाई जो रूट ऑस्ट्रेलिया को, के कम जैसे। ऑन जो रूट, लाइक फॉर योर नेम जस्ट प्ले वन गुड नॉक। अभी तक एक भी 50 नहीं मारा है पूरे पूरे या वर्ल्ड कप हाँ, में। भाई ये his चुप अच्छा। average is pathetic man. He 25 innings and his average is 7 or 8. बटलर का 10 है भाई। हाँ यार, yeah, I remember last match when someone was saying Butler one of the best, white ball players ever. He was अरे playing like shit, स्टिल पता सब नहीं क्या। इनिंग्स खेला है बटलर, और शायद 110 टोटल है 8 इनिंग्स। भाई ये लोग ना, इयन मोगन, ये सभी इनके पंडित, when they take Butler's name they have that starting line saying that the greatest white ball player Butler is still Yeah, not yeah. in form. अरे यार। जैसे वो पाकिस्तानी चैनल पे इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, वर्ल्ड कप विनर वसीम अकरम, वैसा बटलर को इतना। Man, it still makes me laugh the way he got out, man, root the other day. Yeah. भाई Why, कुणाल why try लेकिन such unorthodox shots when you're not in form? Root का Yeah, तो actually, Root is done. I think Root should just stick to Test cricket now. yeah, he has to. ऑफिशियली ही शुड से आई शुड नॉट बी पार्ट ऑफ फैब 4। टुमारो ये साला शकीब आके फिर दूसरे को टाइम आउट ना कर दिया। भाई ऑस्ट्रेलिया शकीब में। लास्ट मैच है, कुछ ना कुछ और बकचोदी करके जाएगा। मे बी वर्ल्ड कप का भी लास्ट मैच है। हाँ हाँ, he will retire Yeah. from there. I think they have to also get banned because of the political involvement. Yeah, all that shit with Tamim Iqbal. Hey, talk about India, Netherlands. Do you think Netherlands can top Do- the highest inning score against India, beating Afghanistan 270? नहीं यार, वो अगेन जो कुणाल ने बोला, इंडियन बॉलिंग विल बी टू हॉट फॉर देम टू हैंडल। ऊपर से वो Yeah. मैक्स और विक्रमजीत को तो कोई क्लू ही नहीं होता है क्या करना है आगे। भाई दे शुड Even though लिटरली it's बी नंबर 10 एंड नंबर 11 व्हाइल भाई बैटिंग। विक्रम तो क्रिकेट क्यों खेल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। वी हैव बेटर गली क्रिकेटर्स देन हिम प्ले फॉर नेदरलैंड्स। ही इज सो क्लूलेस यार, व्हिच इज इन स्विंग व्हिच इज आउट स्विंग। या विक्रम, आई आई होप उसने प्रोग्रामिंग का बुक खोल दिया होगा साइड में अभी तक। मैन अरे, वी विल बी नॉट या सीइंग ओडीआई जी, क्रिकेट फॉर अ नेदरलैंड्स ने व्हाइल थोड़ा मैन। डिसअपॉइंट किया बिकॉज बास डे लीड है, इतना बड़ा नाम है, फर्स्ट मैच इतना अच्छा खेला है, 4 विकेट्स एंड हाँ 63 रन। ट्रू। उसके बाद से एक भी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दिया। या लास्ट मैच में लोगन वैन बिग भी जिस तरह से आउट हुआ, ही वाज लाइक दिस, मतलब उसका इंटरेस्ट ही था। तो या नेदरलैंड्स जैसा बोल रहा था शिखर, एग्जीबिशन मैच है बस। बट अच्छा रहेगा अगर 2-3 50s मारे नेदरलैंड, थोड़ा अगर मैच को लंबा चला पाए। या ईशान खेलेगा क्या? नहीं शायद ना, यही टीम खेलेगी। maybe, हाँ, मेरे को खैर अब ज्यादा लंबा what do नहीं you, खींचना अच्छा, चाहिए इस मैच को, सेकंड yeah, what बैटिंग do you करना guys चाहिए इंडिया। think? Should India give rest to players? Can India can play the full team? मुझे या नहीं एक्चुअली लगता दे दे विल। सकते हैं यार अभी। अरे यू हैव लाइक परफॉर्म्ड सो वेल इन ऑल 8 मैचेस, Yeah. इवन दो इट्स अ वर्ल्ड कप मैच, यू कैन रेस्ट प्लेयर्स। Yeah, लेकिन आई रेस्ट देने थिंक से don't you think tempo भी थोड़ा break हो जाएगा? It will be a big gap between the last match and the semi-final then. and Virat, Rohit ka this will be the final World Cup, right? So I don't think they will be resting themselves. So and Shreyas, he wants to play more केएल को innings. रेस्ट दे सकते हैं भाई। या केएल को बिठा दो यार, Okay. सच में केएल को बिठा दो, and Ishan has to come and make 200 so that he वो can Yeah, also ईशान को sit एक that'll back. मैच be खिला fun. सकते हैं यार उसकी जगह, और कुलदीप की जगह कोई और रिजर्व स्पिनर है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा अश्विन अच्छा, है ना। अश्विन, अश्विन को खिला सकते हैं एक मैच। Ash, how can you? अश्विन का मैच हो गया, चेन्नई में खिलाना था उसको, बस हो गया। ट्रू। अश्विन कोस रहा होगा हार्दिक के ऊपर, साला क्यों चले गया है यार, उसके वजह से देयर वुड बी सो मेनी अदर ऑप्शंस फॉर देम। जिस दिन बाकी हार्दिक। बैंगलोर का विकेट है, बाय चांस इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है तो यार 400 बनाना चाहिए यार, थोड़ा सेमीफाइनल के पहले वानखेड़े में खेलने से पहले प्रैक्टिस कर लो अच्छे रन बनाने की। Yeah, that be good practice. लेकिन हाँ, that be good practice. नेदरलैंड्स में तो Yeah, 400 I think बनने Rohit चाहिए। Aying, man, he has a very good average at Chinnaswamy, so I think he might try and बिकॉज इंडिया ने go अभी all तक out. मैचेस तो बहुत अच्छे से जीते, बट 400 नहीं बनाए ना, तो
एक अच्छा रहेगा अगर बैटिंग फर्स्ट करके, अगर आप पूरी स्ट्रेंथ से खेल ही रहे हो तो व्हाई नॉट प्रैक्टिस फॉर वानखेड़े, व्हाई नॉट जस्ट ट्राई टू स्कोर क्विकली विदाउट लूजिंग विकेट्स. तो True. Yeah, Cool, folks. Yeah. and this for a while we won't be seeing ODI cricket, man. Champions Trophy beats T20 format. Acha, is it so? Champions Trophy T20 Yeah, format for the first time. they will announce. Yeah, it's T20 format. So फिर तो वर्ल्ड कप ही हो गया ये तो Oh. T20 का. I mean, we anyways have a T20 World Cup the year after that. yeah, Yeah. and then Olympics भी है ये मुझे नहीं after पता that. था यार, चैंपियंस I ट्रॉफी don't का. know, means Oh. Twitter में share कर रहे थे सभी कि oh Oh. no, we will be seeing T20 Champions Trophy. So I'm not sure how Yeah, true like it फर्स्ट is. 20 मैचेस जब हुए थे वर्ल्ड कप के तो मेरे को भी डाइंग फॉर्मेट लगा, बट लाइक लास्ट 20 मैचेस में वी हैड इनफ एंटरटेनमेंट यार, वी हैव सम really good That's why matches. England couldn't cope with this 50 over cricket, man. There is like stop and start game Probably. है ना ये. So that's why T20s में you have to go all out, like ball one से. So that's where England collapsed, I guess. And all bilateral series should stop. We should have 3 or 4 team contest ODIs में, Yeah, तभी this मजा is आएगा. something we have been talking for a while now, but Yeah, Yeah. that's how if high the two big dynamics Needs teams to are call pause. playing, there for. should be one, have to come in and play, man. Like Afghanistan needs to get more chances. Afghanistan, Netherlands, Well, they're deserving now. Afghanistan does. I think these two are more deserving than this Faltu Sri Lanka team and Faltu Bangladesh team, who only play in their own grounds and win games. यार At least सबसे बड़ा these. तो वही क्वेश्चन है ना, जब मैंने ग्रुप में पूछा था कि Mm, बांग्लादेश और श्रीलंका में से कौन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, एवरीवन वाज लाइक अरे इट्स सो हार्ड टू पिक बिटवीन दोस टू. both are, दो यार. नॉट डिजर्विंग. या आई विश नेदरलैंड थोड़ा ऊपर आ जाती. हाँ यार, it's अच्छा गाइस, very. तुम्हें क्या लगता है एलेक्स कैरी को वापस लाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, बिकॉज जॉश इंग्लिश अगेन लाइक वी सॉ हाउ ही इज बैटिंग. Yeah, इसका पता नहीं. भाई I think they should. एक फ्रॉड इनिंग्स के साथ वो आ गया यार, क्या है वो फ्रॉड का 40 विथ 2-3 ड्रॉप कैचेस के एंड बाद वो ऑस्ट्रेलिया 40 इज और रन नोन टू पे था. मैनेज प्लेयर्स सो वेल, उन्होंने कैरी को ऐसा ड्रॉप कर दिया, इट्स वेरी क्वेश्चनेबल नाउ. Yeah, maybe Carey wanted some rest. पता नहीं. नहीं यार, वो इंग्लिश ने ना एक 40 और रन या एक 50 मारा था, पता नहीं किसके साथ, बट इट वाज अ फ्रॉड बट 50, लाइक ही हैड 2 चांसेस नहीं ड्रॉप्ड. नहीं, और उस मैच में ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया वर मेकिंग अ बिग स्कोर, तो बीच में आके जस्ट अच्छा कंट्रीब्यूट कर दिया, या 50 ऑफ 32 और 35 बॉल्स. समथिंग लाइक दैट, मैन. आई कांट रिमेंबर द गेम, बट या दैट वाज इट फ्रॉड इनिंग्स अगेंस्ट मेड इट. श्रीलंका और समवन, या श्रीलंका या After, पाकिस्तान के अगेंस्ट. bro, after that Afghanistan game, he had to be dropped, man. What is that shot? Like 8 stump ka wicket ball pe he was going for it first ball. Like that is next level ka tha. So I think he needs to be dropped, but I don't think they will drop, man, because of the winning momentum. They will go with the same team. These guys are Kunal, also anything Yeah. you want very to share, because superstitious, you man. saw That's India and why. New Zealand league match and now India and New Zealand semi-final is happening. तो And मतलब ग्राउंड में रह के डिड यू फील एनीथिंग डिफरेंट कि कहाँ पे कोई वीकनेस है जहाँ पे न्यूजीलैंड हमें फिर से हरा सकती है सेमीज में? नहीं यार. I did not feel much, honestly. ओके, टच, या लेट्स कीप फिंगर I क्रॉस. the mean, only thing I can see is the bowling is not like the 2019 ka bowling. They still have those weaknesses. Saudi is not like the same old Saudi. Bolt, ओह या okay. न्यूजीलैंड, आई थॉट तो इंडिया Yeah, बोल yeah. रहा है, मैं बोला भाई नहीं, इंडिया का बॉलिंग. न्यूजीलैंड का India is बॉलिंग बोल रहा हूँ. stronger बैटिंग than इज ओके, बैटिंग इज like comparatively same है, but bowling में या I think. we should do a proper dedicated session and talk about India New Zealand. Yeah, कहाँ पे we what will. we feel. दे शुड नो कि फर्ग्यूसन डजंट स्केयर अस, ही एक्चुअली एक्साइट्स अस. रोहित शर्मा को बाउंसर डालेगा तो बॉल बाहर ही जाएगा. Ball हाँ बॉल अच्छी. Yeah, रोहित but the शर्मा pull तो shot. वेट करेगा, भाई तू डाल 150 पे बाउंसर. but फट रही है भाई मेरी. हाँ मतलब Yeah, now थोड़ा सा that like नर्वसनेस you तो feeling है. nervous now. What if something happens that one day? You feel so या nostalgic about I 2019. हम can't लोग take इतना it अच्छा खेल after रहे थे, that अचानक से उस Afghanistan, दिन. man. बिकॉज After वी that नो दे आर Afghanistan game, I केपेबल. can't take it. Yeah, because we know they are capable of shocking us, and we also know what they have done in the past. So And also in the post-match presentation, both Williamson and Bolt were so confidently saying those words, man. विलियमसन तो भाई हाई स्कूल बंदा है ही. He's like विलियमसन everyone wants that peace. क्या है ये? Peace क्या है?
I feel bad for Williamson, yaar, such a legend. He could not play. He only played like 2 or 3 matches, so 3 matches. But he's back now, right? He's back now at the, Oh, but He's back. ACL injury And के he बाद had a he has good to come आना back start almost. last. within like 6 months में it's like next level, man. ACL it takes like 8 to 10 months minimum. Uh-huh. But And मैं कल don't jinx highlights it. भी He देखा can. था ना, तो the way Mitchell and Williamson का partnership, it was so beautiful. They were playing such good shots. भाई पता चला विलियमसन सेंचुरी अभी मार दी, ठीक है, सेमीफाइनल में, so please. भाई वो तो मुझे लग ही रहा है मारेगा, so our plan should be to take all the other batters out. one thing I'm confident is with this bowling lineup for India, man. It's surely better I- than 2019. Yes, Yeah, 2019 I से don't शुकर remember है it was the भूवी नहीं last खेल रहा है time. भाई. Yeah, it looks good. Shikhar's favorite, भाई नहीं, Pratik's favorite movie. the amount of Old swing movie. also Indian Yeah, bowlers man. are I'm getting. I'm अच्छा, thankful कि we have taken Bhuvi completely out of this white ball Yeah. cricket, man. By the way, I for a had change, enough. my prediction will be Bumrah for our most wicket taker on that day, because बुमराह अभी तक थोड़ा ऐसा जस्ट एक विकेट लेके बाकी लोगों को दे रहा है कि चलो तुम लो, बट आई थिंक अभी बिग मैच में बुमराह विल डिलीवर. मुझे क्या लगता है पता है, they will try to play out Bumrah and they again want to try and hit Shami, and that's where they will fall in a trap and we will get wickets. So मैं Shami बोल रहा हूँ. या और I think it will बट be रचिन Bumrah भी as बहुत well. मोटिवेटेड होगा यार, लाइक सचिन के ग्राउंड पे रचिन का लास्ट मैच, और इतना फियरलेस खेला है What? वो पूरा टूर्नामेंट. व्हाट इफ ही स्कोर्स अनदर 100 एंड बीट सचिन रिकॉर्ड, No, तो वो what's भी देखना इंटरेस्टिंग Well, होगा. well, folks, I think I'll have to leave now. So yeah, it was, या yeah, great discussing all this. See you guys soon. या गुड प्रीव्यू फॉर अर्ली Ta-da. प्रीव्यू फॉर टॉप 4. या चलो. ओके, चलो गाइस. Okay, guys, या thanks for your support and या प्लीज please लाइक एंड subscribe. सब्सक्राइब गाइस. Yeah, We want to and reach please 350 comment subs as well. before the end of World Cup. Please comment Yeah, as well about your uh, review on our points, and yeah, tell okay. us if we where we need to better. Yeah, feedback is important. Yeah. Thanks, Yeah, Vishnu. thanks.